completed chapter number 1, sources of history, and we saw various sources of history like written sources, material sources, oral sources, and also audiovisual sources. Yes. Now let us see chapter number 2, Europe and India. Okay. In this lesson we are going to see about Europe. The changes that had occurred in Europe in the modern era, and because of which it had impact on India. Okay, let us start. During the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. Okay, during the modern period there have been various happenings in Europe. यूरोप में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस आए जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर रहा. तो इसलिए इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमको यूरोप में हुए इवेंट्स के बारे में जानना जरूरी है. ओके. Period of Renaissance. Period of Renaissance means period of rebirth, or you can say revival, or renewal. Okay. So ये जो period रहा, modern period रहा, that is the period of Renaissance. In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. यानी medieval period का जो last phase था, that is 13th to 16th century, okay, that is considered as a period of Renaissance क्योंकि बहुत सारे changes आए उसमें. Okay. During this period, Reformation, religious reform movement, and geographical discoveries laid the foundation of the modern era. Hence, this period is also known as the age of Renaissance. Okay, during this period, Renaissance period में बहुत सारा reformation हुआ. Reformation means changes. Okay, बहुत सारे changes आए and religious reform movement हुआ. Then geographical discoveries भी हुई, बहुत सारे नए-नए places की discovery हुई. So this time, this period was known as period of Renaissance, or you can say age of Renaissance. Okay. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition, which gave momentum to an overall development. Okay, during this period, various fields like art, architecture, philosophy, अलग-अलग फील्ड में रिवाइवल हुआ. ओके, ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में रोमन ट्रेडिशन का रिवाइवल हुआ जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ. ओके. During the Renaissance, humanitarianism was given During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. मतलब humanity को यानी human being को ज़्यादा importance दिया गया. Okay. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Instead of religion, man became center of center point of all ideology. Okay. Renaissance period के टाइम पे ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमैनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और लोगों के आउटलुक में चेंजेस आए. ठीक है. रिलीजन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन आइडियोलॉजीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे. पहले रिलीजन के ऊपर ही सारा इवेंट रिवॉल्व करता था, सारे आइडियोलॉजीज बेस्ड होते थे, बट धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे. ओके. The reform movement spread throughout all
sectors of human life. Through knowledge, science as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. You know, reform movement यानी movement, वो movement जिसमें you know अलग-अलग fields में changes आए, okay? And human life के सारे sectors में almost all fields में changes आए और ये हम knowledge के through, science के through and different section of art के through you know observe कर सकते हैं, okay? The art and literature of Renaissance period depict sentiments and emotions of human beings. Literature was produced in local language for better understanding to the common people. Okay, art and literature of Renaissance period depict sentiments, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या showcase करते हैं? Sentiments and emotions of the human being. Okay, and literature was produced in local languages. Local languages में you know literature produce होने लगे so that common people can understand, common people can read it. Okay. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Due to this discovery, new ideas, concepts and knowledge reached to all sections of society. Okay, on 1450 AD में Johannes Gutenberg ने प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी की, जिसकी वजह से सोसाइटी के सारे सेक्शन में यू नो लिटरेचर अवेलेबल हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा यू नो बुक्स पढ़ने लगे एंड इवन लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होने लगा, तो लोग इजीली उसको समझने भी लगे. ओके, नाउ सी हियर इन दिस बॉक्स, Leonardo da Vinci. He is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. Okay, Leonardo da Vinci was an Italian and he is recognized as an all-rounder. Okay, all-round personality, and he was well versed in different branches of science and art. He had mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. मतलब almost सारे field में वो you know माहिर थे, expert थे. Okay, so he was an all-rounder, all-round personality. But he became famous, world-renowned as a painter. Means वो famous किसकी वजह से हुए? As a painter. Okay. His paintings of Mona Lisa and the Last Supper became immortal. उनकी जो painting, you know, थी जो Mona Lisa और Last Supper, वो you know अभी भी लोगों को वो painting देख के इनकी याद आती है, यानी you know as a painter वो ज़्यादा famous हुए, even though he was an all-rounder personality. Okay. Now see religious reform movement. Religious reform movement मतलब you know पहले के ज़माने में लोग ज़्यादातर religion you know beliefs में रहते थे, superstitious beliefs follow करते थे, ठीक है, उनके ideologies थी वो religion के around ही revolve करती थी, तो उसमें भी you know changes आए, ठीक है, that changes is known as religious reform movement. The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. Okay, जो independent intellectuals थे, जो scholars थे, जो thinkers थे, okay, उन्होंने जो Roman Catholic में you know जो religious ideology follow होते थे, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया. The Christian priests were taking advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals. They looted the people in the name of religion. जो Christian priest थे, जो कि church में you know रहते थे, वो लोग
reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gain more importance. यानी जो religion के नाम पे अलग-अलग रीति रिवाज कराते थे, रिचुअल्स कराते थे और लोगों को लूटते थे, उसमें changes आया, उसमें reform आया, and that is known as religious reform movement. And इस movement के बाद human freedom and rationalism means logical thinking को ज़्यादा importance दिया गया. Okay? Now let us see geographical discoveries. Okay, ये period में बहुत सारे नए places की भी discovery हुई है. Okay? In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, that is Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. Okay, 1453 AD में Ottoman Turks ने आके Constantinople जो कि इस्तांबुल है, जो कि capital of Byzantine Empire था, उसको conquer किया. Okay, invade किया उसको. The overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. Okay, जो trade route जो एशिया और यूरोप को जो कनेक्ट करती है, वो रूट इस सिटी से होके गुजरती है. Okay, since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. Okay, जब टर्क्स ने उस रीजन को कॉन्कर किया, इन्वेड किया, कैप्चर किया, उसके बाद उन्होंने जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला जो रूट था उसको ब्लॉक कर दिया. एंड जिसकी वजह से देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट. मतलब ट्रेड रूट के लिए एक दूसरा ट्रेडिंग के लिए एक दूसरा रूट फाइंड आउट करना जरूरी हो गया था जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करे. ओके, दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. इसके वजह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का फेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो रूट था उसको ब्लॉक कर दिया गया था. एंड यूरोपियन कंट्रीज को एशिया में ट्रेडिंग के लिए आना था, तो इसके लिए उन्होंने दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया. ओके, now see, let us know geographical discoveries. During 15th century, European sailor went on expedition to discover sea route to India. Okay, 15th century के दौरान जो यूरोपियन सेलर थे वो ट्रिप पे, एक्सपीडिशन यानी ट्रिप पे निकल गए टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया. इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर करने के लिए वो सेलर्स निकले. ओके, नाउ लेट अस सी कौन निकले. In 1487 AD, Bartolomeu Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent. Okay, Bartolomeu Dias 1487 AD को निकले थे इंडिया को ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुंचे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टिप में जाके पहुंचे, which we now know as the Cape of Good Hope, जिसको हम आज Cape of Good Hope के नाम से जानते हैं. Then in 1492 AD, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west, but reached on the eastern coast of the continent of America. Then 1492 AD में Christopher Columbus निकले इंडिया के लिए, बट वो कहाँ पहुंचे? वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका पहुंच गए. ओके, देन in 1498